रिटेलर्स होते हैं, वो लोग प्रॉफिट अपना नहीं लेते हैं, तो इसके कारण से काफ़ी डील्स रहता है उसमें। उसका नाम होता है ब्लैक फ्राइडे, ओके। मीन्स वो काफ़ी डील्स यहाँ पे होते हैं उस टाइम पे। तो और सर आपको ब्लैक जैसा फ्राइडे में आप लोग हुँ, क्या करते हैं? ब्लैक शॉपिंग। फ्राइडे बेसिकली से शॉपिंग के लिए है, कि आप कहीं पे दुकान पे गए तो आपको काफ़ी डील्स मिलते हैं। यस सर। लाइक हाँ, लेट मी सर्च एंड शो यू। एज तो सर एग्जांपल फिर भी यहाँ पे तो सर देखते फिर हैं भी कि इसको दिवाली छठ पूजा में थोड़ा सा कुछ जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, ये लोग थोड़ा ज्यादा मतलब अट्रैक्ट कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हाँ, यहाँ हाँ, पे डिस्काउंट देते हैं। करेक्ट, कहीं उनको पता है कि दिवाली छठ पूजा के टाइम में लोग ज्यादा शॉपिंग करते हैं, हाँ, तो कैसे यस सर। ग्राहक को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। यस। ये ओह! जो है ना, ये यहाँ पे ये काफ़ी पहले से अभी आप देखो, कि आप सर्च करोगे ब्लैक फ्राइडे, तो ये फेस्टिवल्स और उसपे तो डील्स होते ही हैं यहाँ पे, वो तो एक अलग ही है। लेकिन ये जो ब्लैक फ्राइडे का रहता है ना, स्पेसिफिक दिन जो होता है नवंबर का लास्ट फ्राइडे, हर एक शॉप पे, हर एक जगह पे देखो इतनी सारी अलग-अलग डिफरेंट फ्लायर्स, जैसे ये वॉलमार्ट है, बेस्ट बाय है, सबका देखोगे ना, सबके अलग-अलग फ्लायर्स होते हैं इसी के लिए। अभी ये सब ब्लैक बेस्ट बाय में देखो तो, और इसमें क्या हो ना कि काफ़ी सारी चीज़ें फ्री भी मिलती हैं, तो लोग क्या है ना, रात में लाइन लगा के आते हैं। जो 50 लोग सबसे पहले जो दुकान में चले गए तो बहुत सारे फ्री चीज़ मिलेंगे उनको। फर्स्ट 50, फर्स्ट 100 बेस्ट ऐसे लाइक। 50 हाँ, डोर बस्टर्स आर हियर, सी दिस लैपटॉप वगैरह या कुछ भी ना काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट पे मिलते हैं। जैसे ये 1700 का टीवी था, $1000 पे मिल रहा है। राइट दिस वन और उसके अलावा उसमें काफ़ी सारे रिबेट्स उसके बाद भी मिलते हैं। तो स नहीं है देखो। So it's a focus means it's a main theme is it's a marketing or it's a something, it's a cultural things. कल्चरल तो इसमें क्या हो ना कि सी दैट्स व्हाई मार्केटिंग का तो हमेशा चलते रहता है, कुछ ना कुछ तो रहेगा, राइट? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, जैसा लेट्स सी इफ यू सर्च अबाउट थैंक्स गिविंग, ये पूरे यूएस में इस टाइम पे इट्स लाइक बिग हॉलिडेज, राइट? सो थैंक्स गिविंग होता है। यहाँ पे ऐसा दिन देख के नहीं होता कि मान लो जैसे क्रिसमस हो गया 25 दिसंबर को, यहाँ पे ऐसा नहीं है। थैंक्स गिविंग इज लास्ट थर्सडे ऑफ नवंबर, तो वो हमेशा चेंज होते रहता है डेट, राइट? Date. सो थैंक्स गिविंग में क्या करते हैं लोग, यहाँ पे एक बर्ड होता है टर्की, तो वो लोग टर्की खाते हैं उस दिन, जैसा चिकन टाइप का ही होता है। नेशनल हॉलिडे यहाँ पे ऐसा मनाते हैं, यहाँ पे भी है, कनाडा में ही सब लोग अलग-अलग करते हैं। व्हाई डू वी सेलिब्रेट? सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो हार्वेस्ट के लिए होता है, हार्वेस्ट पहले जो होता था, तो ये कब से चल रहा है देखो, बहुत सालों से ये है। And then next day is Friday, right? So if you're celebrating Thanksgiving on Thursday, then पे अभी जहाँ पे जिनकी फैमिली है सब एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, राइट? जिनके बच्चे अलग-अलग जगह पे हैं, देन दे विल गो टू देयर पेरेंट्स हाउस और सब लोग वहाँ पे मिलके उस दिन खाना बनाते हैं, राइट? जिसमें टर्की वो लोग बनाते हैं यूजुअली, और टर्की एक बर्ड होता है, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट डे इज़ फ्राइडे, सो फ्राइडे फिर सब लोग शॉपिंग करने जाते हैं और उस दिन जो दुकानदार होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो लोग प्रॉफिट नहीं बनाते हैं। तो इसके लिए सब चीज़ पे उनका प्रॉफिट अपना कम कर दो, सेल हो जाता है, तो वो एक कॉन्सेप्ट है। As like wholesaler type means हाँ, every एग्ज़ैक्टली तो वो डील्स रहता है। retailer think that yes, one day it's good for turnover. हुँ, If यस। turnover is increasing, that means a percentage of हुँ, हुँ, margin reduced. हुँ, हुँ, या so basically Thanksgiving means the act of expressing or feeling thankful. In other words, giving thanks you're grateful for, right? It could be your parents, right? Usually it's for parents and then for your country. हाँ, तो यूजुअली जब ये स्टार्ट हुआ था गिविंग फूड टू जो यहाँ पे नेटिव अमेरिकन्स थे, तो अलग-अलग कहानियाँ हैं, लेकिन बेसिकली ये है कि इट्स अ बिग फेस्टिवल एंड इट्स नॉट फॉर रिलीजन,
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ क्रिश्चियंस ही मनाएंगे। तो यहाँ पे जो भी है ब्लैक है, जो भी जिस कम्युनिटी से भी हो, लेकिन बट यस इट्स नेशनल हॉलिडे, इट्स नॉट ए रिलीजियस थिंग। सब एक साथ मिलता है एंड देन नेक्स्ट डे दे विल गो फॉर शॉपिंग एंड दैट इज योर ब्लैक फ्राइडे। सो थर्सडे को शाम से ही लाइन लगती है, जैसा फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे विल स्टार्ट लेट्स से रात को या सवेरे दुकान खुल गई, 3 बजे सवेरे या 4 बजे सवेरे लाइन लगा रहता है, राइट? और हर एक दुकान में, हर एक चीज़ में कि कहाँ पे आपको कहीं पे 10 को फ्री मिलेगा, कहीं 50, कहीं 100। तो फ्री स्टेप्स काफ़ी रहते हैं कि आप जस्ट आओ, फ्री लेके जाओ। और डील्स तो है ही, अलग-अलग जगह पे डील्स तो रहेगा ही। सो इट्स मोर काइंड ऑफ लाइक कल्चरल थिंग हियर। लेकिन ऐसे आप लोगों का कंपनी का हॉलिडे कितने रहते होंगे साल का, ईयरली हॉलिडे? साल का हमारा होता है 10 दिन। टोटल 10 डेज ओनली? हाँ, 10 डेज़। हाँ, ब ये जो पब्लिक हॉलिडेज़ यहाँ पे। इंडिया में भी वही है 10 डेज़, जो कंपनीज़ यहाँ की है ना, वहाँ पे 10 डेज़। और आप अपना पर्सनल वैकेशन जो होता है वो 25 डेज़ आपका अलग से होता है, राइट? यू कैन टेक पीटीओ। Okay, like पीटीओ one है, सिक लीव है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, यस। month. In a year, 1 month. हाँ, तो 25 वर्किंग डेज़ हो गया ना, तो आप समझो वो पूरा आप 6 वीक हो गया, Mhm. 5 वीक, 5 वीक वो हो गया और आपका 10 डेज़ हॉलिडे। और यहाँ पे यूजुअली जो यूएस के पब्लिक हॉलिडेज़ होते हैं, वो 7 या 8 दिन होते हैं। 2 दिन होता है यहाँ पे फ्लोटिंग हॉलिडेज़ कि कभी भी आप एक्स्ट्रा 2 दिन ले लो। तो टोटल विल नॉट गो बियॉन्ड 10 डेज़, ऐसा यहाँ पे है कॉन्सेप्ट। और वही कंपनी ने अडॉप्ट किया हुआ है ग्लोबली, राइट? ऐसा एक्सेंचर में ग्लोबल पॉलिसी है कि किसी भी कंट्रीज में पेड पब्लिक हॉलिडेज़ 10 डेज़। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पे अभी कैसा है कि मान लो गणपति की छुट्टी आपको एक्सेंचर में मुंबई ऑफिस में मिलेगी, तो चेन्नई, हैदराबाद वो सब ऑफिसेज़ में नहीं मिलेगी। Wow. State wise means हाँ, regional. हाँ, उनका जो फेस्टिवल्स है, अभी सर बैंगलोर का है आई थिंक मई डे या कुछ ऐसा ही है, तो उनका जब बैंगलोर का है पुणे का डिफरेंट होगा, मतलब तो वही है लेकिन टोटल 10 डेज़ तक होगा। ऐसे में एग्जाम्पल देखते हैं ना कि जैसे बैंक है, बैंक तो हर जगह पे है, लेकिन उसका भी हुँ, रीजनल हॉलीडेज एंड नेशनल हॉलीडेज, इट्स डिफरेंट थिंग। हुँ, मतलब ये वही हुँ, एसबीआई का ब्रांच अगर मुंबई में है तो उसका हाँ, छुट्टी कैलेंडर अलग है, लेकिन वही एसबीआई करेक्ट, का बिहार में है या दिल्ली में है तो उसका मतलब रीजनल हॉलीडेज के लिए और नेशनल हॉलीडे इट्स डिवाइडेड टू पार्ट्स। करेक्ट, 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 यस, लाइक 15 अगस्त इट्स अ नेशनल हॉलीडे, इट्स ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल। करेक्ट, लेकिन कुछ कुछ या, है जो रीजनल लैंग्वेज, जैसे गणपति पूजा महाराष्ट्र के लिए हो गए, कलकत्ता हुँ, साइड के लाइक या, दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा, या, एग्ज़ैक्टली सेम वे राइट? नेशनल हॉलिडेज आपके हो गए 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, या, तो Arjit is class 7th, right, Arjit? Yes, sir. What's your view regarding English language? Because in a small city area, where are you living? In Sir, Darbhanga, I'm living in Darbhanga, Bihar. Darbhanga city. But I'm come to Purnia due to Chhat Puja festival. हुँ, Okay, So okay, therefore, I can't join some lessons. Uh, okay, okay. What's your school name, Arjit? Ramashar Roy Public School. Okay. So it's a government school or private school? It's a private. It's a private school, sir. I like it's a CBSE board pattern. Yes, sir.
it's a CBSE board, so it is private. Till now you are in at Nani's place. Yes, so it's a holiday till now. Chhat Puja. Uh, sir, I can't hear you. Hello, नहीं, hello. मैंने पूछा कि अभी अभी तक के नानी के पास में हो तो क्या स्कूल का छुट्टी इतना दिन लंबा है या स्कूल चालू हो गए होंगे? नो सर, अभी लम्बा नहीं, मतलब कि मेरी स्कूल खुल गई है, लेकिन कुछ दिन मतलब मेरी मामी लोग कही कि रुकने, तो इसीलिए मैं रुक गया। मेरी मम्मी लोग रुक गई। ओके। और फिर मेरे फादर तो आज ही चले गए दरभंगा। कंप्यूटर कोर्स में एज लाइक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, समथिंग समथिंग, computer class is also available in school, I think, right? हेलो। हेलो। सर, यहाँ पर शोर कर रहे हैं बच्चे लोग, तो इसीलिए मैं कुछ भी सुन नहीं पाया। नहीं, मैं पूछ रहा था कि अभी जैसे तुम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहाँ पे कंप्यूटर के भी क्लासेस होते हैं ना, कंप्यूटर यस सर, होते हैं सर। में अभी तक तुम लोग क्या क्या सीखे हो, अभी तक क्या क्या करते हो कंप्यूटर में? सर, पेंट सीखे हैं एडवांस्ड तरीके से, मतलब कि मतलब पेंट हम लोग सीख चुके हैं, टक्स पेंट सीखे हैं, एक्सेल सीखे हैं, एंड पावर पॉइंट अभी नहीं सीखे हैं, और फिर ये MS W लोगो जो होता है वो सीखे हैं। उसमें मतलब थोड़ी बहुत कोडिंग भी करनी होती है MS W लोगो में, तो वो सब सीखे हैं। This is a big difference, Rajeev ji. I think it's a private school and government school. वो तो ऑब्वियसली, तो डेफिनेटली। And right now, Rajeev ji, in a high school we also seen a smart class something. And now I think government realized that yes, we can't forget the role of computer. So we hope after few years it will also applicable in at least high school in government Yeah. school. See, the until government do performance check of teachers, right? So salary should be dependent on the performance. Right. This is the big game changer. Right? Even now, Yeah, because see, right now, if they don't teach, what you can do? Nothing. yes. Right? There is no sense of responsibility, and that's why people wants to go for government job, right? Because they don't want to work. So Yes. that attitude has to be changed, right? They needed to mention performance month wise, Right, weekly. yeah, yeah. Performance, like what are you teaching, right? Like, see, they don't adapt to change. The same syllabus, same thing you are teaching for long. And what happened? I think actually maximum in village areas, parents are not educated. Yes. And naturally we think that kids, no any kids want to read or Yeah, education. yeah, they will not be proactive, right? Like few Yeah. cases will be exceptional, but think about it. See, yeah, and then it's a corrupt society also. Namaste, sir. Hey, Amarnath ji. गुड इवनिंग Hello, अमरनाथ सर। hello, namaste, everybody. Hey. Yes, sir. So yesterday few students increased after Yeah, course. Yes, first time from Banka district. yeah, good, 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 good. No, you are doing great job.
So where are the students today? Yeah, student till now no I, any. I think I think you should send letters to all the engineering colleges in Pune area, Bombay area, and other places, Bihar like Muzaffarpur, so that they can join on Sunday for professional development, because they are the one who really can benefit from our discussion on Sundays. Right, Yep. right. Sure, sir. Yeah. So what you guys are talking about? Election results in US? Is that the topic? Yeah, it was great. Yeah, so yes. So what is the reaction in India, Pankaj, about the American election? Yes, Modi ji very happy Yes, after. it's a party line. It's a reaction is as per party line. Right? So BJP supporters are super happy. Yeah. Congress is doomed. It's So, so. yeah. Yeah, they have to keep going left until they fall from cliff. Yeah, they will be outdated. Right? See, that's why. Yeah. What they are trying to do? Yeah. They till So, like when yesterday he was talking about Jatiya Janagana and then he started there in yeah. Telangana. What is this nonsense? I mean, these are Yeah, the left of the left. What problem is that going to solve? Everything we should do anywhere, we try to do to solve a problem. If there is no benefit out of it, then why do we do it? right. We The only yeah, Jati is not a part of Hindu or Sanatan religion. yeah, Uh, yeah, Varnashram system has that is created by British Jati yeah. system. So why we promote that? We are we have Varnashram system. Varn means Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Sudra. And then I remember a very good story from one of the I think story maybe it was from I think who was Prabhupada. Yeah, I think somebody asked uh, typically we get this question about Jativad from the Americans or Europeans, that whatever you say, but you have the Jati system in India. One of his disciples said that, asked that question. Then he replied that, do you have research and development here or not in the Western culture? He said, yes, we do. Do you have the professionals group who kind of execute everything to make it happen in the society? He said, yes. Do you have a business class or not? Yes. Do you have the worker class in your country? He said, yes. So then what is wrong with the uh, ancient Indian system? Indian ancient system divides society based on guna and karma on these four things, that either you are a Brahmin, it is a complete labor classification. It has nothing to do. See, in the ancient time, everything was philosophy, or you call it science, whatever you want to call it. There was no bifurcation of all the sciences which we call it today. So everything was philosophy or religion or whatever you want to call it. So economics was also part of it, and it is purely Brahman, Kshatri, Vaishya, Sudra, and all this Varnashram, like what you call, like Bachpan and then Grihast and Banprast, Yeah, all nothing but economic classification of labor. That's all it is. And it has really nothing to do with our moksha or, religion. Uh, and so he explained that this is what it is. So part of the problem is that our education system, we are not teaching, even in our Sanatan families, we are not teaching properly things. So everywhere we need to start teaching kids that uh, what is the Sanatana stand for, and it is age-old proof system. There is nothing wrong. We go through the four stages of life here. First 25 years, even in America, everybody goes through college. Middle class families, at least up to 18, everybody goes. So in the beginning of your life, you learn skills. That's what is the
your first part of the life. Second part is you work and give back to society as a producer and maintainer. And third part is really you want to start giving a little bit back because you have taken so much from the society. So now it's time to. So third and fourth part is pretty much paying back to society, which we are doing it right now. Yeah, Vanprasthashram, Sannyasashram. Yep. Right. We are doing it. So there is nothing wrong with those four system or four varnas, but caste system was created by British to divide and rule Hindus because they thought that if we don't do it, there is no way we can control them. And so Congress Party, Nehru was one of the biggest atheists India has produced. Gandhi and Nehru, both were nothing but agent of British India. And they completely education system they destroyed. They completely old ancient system we had. So that's what it is. And if you keep going on these items, then you will be out of touch. Like Vajpayee, I was thinking of Vajpayee 2004 election. This is exactly what happened in this country right now. Pankaj, did you probably you were in the college that time, right? 2004, maybe high school. Yes, sir. In college. College, yeah. So Bajpayee and his time, they this exactly the same thing, that economy is doing great, India is signing, Yes, while yes. the lower middle class and average person was suffering economically. They didn't recognize it. They just thought the pure stock market doing good, and then people in Bombay enjoying life, and they thought that this is what is happening all over the country. This is exactly the same thing here happened this time. All all these Democrats, they thought that stock market is doing good, so economy is doing good. And so history repeats itself. So you see it. What happened there, 2004. Now we see it happening here, 2024. The basic thing is that first you need to work on roti, kapra, and makan. If that, this is called existential need. People need that one first. Once that need is met, then you jump into the cultural part of it. And all these social issues, which but here people are struggling right now. Roti kapra makan. People, young generation cannot buy home. If you inflation has eaten all the raises, so basically people haven't got raises in last like 20 plus years, and but in last 5 years things have gone bad to worst. Uh, I remember not too long ago, one day I went to have a breakfast at McDonald's, and there was little small breakfast, $10. I said, holy cow, how things have changed. We used to have lunch at work, buffet lunch, Indian restaurant in $10. Not too long ago. Yep. Yeah. All right, let's see what else. I see some new faces. If they Yeah. have any questions for me and Rajeevjee on election or anything else you want to ask. Yes, Rajneesh ji. Hello, Rajneesh ji. Please say something about yourself first of all. It will be good to know each other. Yeah, just introduce yourself, and we will also introduce to you. So if you can tell about yourself, that will be good. क्या है मेरा क्या है Hello. Yes. Rajneesh ji. Hello, Rajneesh ji. हेलो Yes, yes. Yeah, हेलो बोलिए, हम लोग सुन रहे हैं, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा आप स्कूल से हैं Sorry. हेलो राजनीश बोल रहे हैं हम
जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। ना। जी जी, आप स्कूल से है यूएमएस राजेपुर? ओके, ओके, आप राजेपुर हाई स्कूल से हैं राजेश जी। जी जी। राजेश जी, हम लोग एवरी सैटरडे लाइव रहते हैं रिगार्डिंग साइंस। जी हाँ, साइंस। एवरी सैटरडे इवनिंग 8 to 9 पीएम हम लोग लाइव अच्छा। रहते हैं रिगार्डिंग साइंस, एंड एवरी संडे वी लाइव रिगार्डिंग समथिंग Else, everything else. Sunday, everything else. Like you any feel anything you. तो आप बोलिए कुछ पूछिए हम लोगों से। मेरा नाम अमरनाथ शाह है, मैं अमेरिका में न्यू जर्सी में हूँ और राजीव जी भी अमेरिका में हैं, टेक्सास में। तो हम लोग 2 जने यहाँ अमेरिका से हैं, बाकी पंकज आप इंडिया के लोगों को इंट्रोड्यूस करवाइए। कोई हमारे स्कूल से है कोई सर यूएमएस राजेपुर से? नहीं, अभी तो कोई नहीं है। अच्छा। नहीं, वही मेरे पे लिंक आया था व्हाट्सएप पे, तो चेक किए कि हाँ, या क्या सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, तो काम कर रहा है, आप आया कीजिए। जी और जी ये जो है हम लोग आपस में बातचीत करते हैं और बातचीत के सहारे जो है हम लोग सैटरडे को साइंस की और इंग्लिश की नॉलेज देते हैं बच्चों को, एडल्ट को, जो सीखना चाहते हैं उनको। और यही चीज़ हम लोग संडे को करते हैं, ताकि लोगों के जी बीच में जी बात एक-दूसरे के साथ गप-सप लगाने से ही आदमी का नॉलेज बढ़ता है, तो वही हम लोग का ये ऑब्जेक्टिव है। जी। थैंक्स सर। ठीक है। हुँ, गुड, गुड। एंड रजनीश जी, मेन थीम एवरी दे लेफ्टेड। तो वो चले गए। Yes, actually, sir, when I visited in village, so a lot of schools I visited. Yes. Yeah. So, What happened to you? Talk to many DMs. Are they doing anything, or they are busy doing their administration? That's all they do, right? yesterday we seen that first time from Banka district, one high school science teacher with a few students live first time. Good, good, Yes. very good. Actually, Rajiv ji, we called during Diwali festival. I called to 38 D. Okay. Mhm. Very nice. And Yep. 15 spoke with me in positively, and they told me, yes, sure, I will do the best for this. I think after Chhat Puja next Saturday, Sunday. Mm. Yeah. We'll reach out like for Yeah, to other kids, right? The college kids, it will be really helpful for them. Right? Like resume writing, interview preparations, right? Getting placement, campus placement. So Amarnath ji, we are in Bana, we are publishing a magazine called Biharika. hmm. I send you the link of all previous Biharika. Did Okay. you? I saw your link, but I was just thinking about it. I Yeah. think last week I saw it. Yeah. Okay. So you Okay. are. Yeah. Yeah. So If you, what kind of essays or articles you are looking for in that to publish? so if it's up to you, right? Like any social. See, today you mentioned couple of things, right? Like let's say for Sanatana Dharma, right? The Varnashram, that could be one topic, or anything related to your science, your specific field of semiconductor, right? How Yeah. it will change the whole GenAI, and then what do you envision what will happen after, like let's say 10 years, right? Like GenAI or AI. It's up to you. Any of your topic. Yeah. Probably I'll just write something small one for actually kids, you know, Okay. Yeah, that because can be great. Yep. what I see the lack in Indian community is that we really are not taking time. We focus on their education very well, but we are not taking time to teach them about our own culture, Mm-hmm. what it is like. you know I have been thinking that people are busy, but what can be done is that we need to design a course, and actually I need your help on that one day class, you know one day class from 9 to 4 with a lunch, like 3 hour session in the morning and 3 hour in the afternoon. And in 1 hour we give the whole overview of Sanatan Dharma to kids, you know Mm-hmm. and then we start a camp. We can have like first the online, and then we can do it. For example, let's say that if you arrange a camp, one day camp to in Texas, I'll come and teach, you Mm-hmm. know
and then we can get the few volunteers just like here, and we need to teach them, because Indian ancient system is very, very rich. There is it is proven technology. I was just thinking, like on the Diwali day, imagine, uh, now we are going to have a Thanksgiving in this country. Imagine if we were all non-vegetarian in India, how many turkey or how many goat we would have slaughtered on Diwali night. Can you imagine? Or suppose if it is American eating everything beef and animal, and so see the wisdom of our forefather, that they and did the analysis. They evaluated that people live 100 years by eating vegetarian as well as non-vegetarian. Both, you can live 100 years, which is the average life. And then, so why don't become vegetarian? Because you can produce a lot more grain easily, and rather than feeding grain to animals, and then how much grain you have to waste to get a few pound of meat. We know that in America. Indian people don't know, but here we know that one. So they made society little bit easier to live. Imagine right now, we are still a developing country, but we are able to feed 1 billion people. Suppose if we all were non-vegetarian right now, India, imagine what kind of life we would be having. I mean, so this is the environmental friendly. I mean, look at it. We do in the puja part, we teach that even from plant and everything has a life, and so we should respect everybody in India. We are trained, like in the puja part, we do water on the plant or tree in the morning, right? Many places still that practice is there. Tulsi dal or neem or bel, I mean, or dhatri. I see people, putting water onto that. Well, it's part of our culture. Yeah. So this tells you that our ancient people were very environmentally advanced. And that we already talked about. They developed the Varnashram system, and then if you look at the philosophical part, equally good there. I see that in Hindu philosophy, there is already a. It is okay to be from left to right or in the middle anywhere. So, for example, in our philosophy, there are six Astic philosophy, we call it, and equally six are the Gnostic philosophy accepted. So, 12 of them. Astic philosophy is considered in Indian system, Sanatan system, as which believes in Veda, and Gnostic system which does not like atheist of the West. And so it was okay to be a Charvak follower, Javam Jiget, Suphang Jivet, Renang Kritua, Ghritam Privet, or be a Advait life, or Dvait, anything you like, it's okay, because the idea was that everything ultimately is trying to find that that topmost thing, Brahm, or whatever we call it, or power, or God, or Ishwar. So, but since nobody knows exactly what it is, so all the guess, all the hypotheses are good. And so that was a respect. You don't see that anywhere in the world, in any other culture. So multiculturalism is already in our society. And so these things we need to educate to our kids. Similarly, the language, Sanskrit. There is no other language like Sanskrit. Sanskrit is right now like Ramayana or Mahabharata or all these things, not the Vedic Sanskrit. Whatever is written, the grammar is pretty much still the same. It has not, if you try to read the Shakespeare now, you will need an extra note to read Shakespeare dramas, because English has been constantly changing. But thanks to Panini, and they are called three grammarian, Panini, Kathyayan, and Patanjali. They fixed the grammar, a Sanskrit grammar, in such a way that it is not changing now. And we all over the country, you have, Hindi, you have 10 different types. Maithili, you have already 6 types. But Sanskrit is only one type in the whole India.
and all over the world. I'm learning in Sanskrit here in America right now, and I can tell you that the same Pani grammar which is taught in India is taught everywhere. Everybody, Tita Ant Sita Tha is everywhere. Ami, Aba, Ama, yeah. Amiyava Ama is everywhere the same. Yeah, All the seven vibhakti, no change. Wahi Samas, Sandhi, all the rules are the same. correct. Okay, and so there is Sanskrit is like our alphabet is based on science. How do we pronounce o, a, e, short and form, so, harsh and dirg? Similarly, our like kavarg, chavarg, tavarg. There is scientific that from where those are coming, like we call it ostak or talab, and these are dant. Because where the so it is all connected to the science. It's not like it just came from pictorial thing. No, they analyzed in the Maheshwar Sutra all the vibration of the sound, and from there, which has the high frequency vibration sounds, they picked that and they categorize them in such a scientific way that every our all things are all the alphabets are there. Pretty much every sound we can think of. So what I see the biggest disconnect is that India need to go back just like Israel did it or China has done it. That Israel went back to Hebrew. We can go back to Sanskrit. Imagine if whole India starts speaking Sanskrit in another. It can be done. Like suppose now I'm taking a class for last 1.5 year, like once a week, and I see that when I can understand Sanskrit now. But suppose if we were trained in the school, not even in the family, in the school in the beginning, and all our education were in Sanskrit, we could be eating just like we learn Hindi in school or English in the school, not at home. We could have learned Sanskrit, and we all could be functioning in Sanskrit, and it would be a lot more easier. You could have connected to the past, everything, all the knowledge, and to the modern, because all the modern vocabulary is Latin based. It will coming, and Latin and Sanskrit are the sister languages in the medical terminology or even in science. It would be a lot more easier for us if we would be speaking Sanskrit today to to understand the Western culture. So so the need is that we have the British education system, and it is our fault as a Sanatani too, that we have disconnected our young generation from very good source of knowledge. Yeah, we are working on this. Like if you see in a small way, right? Like Yeah, 2 weeks yeah, ago, I yeah, attended HSS, right? Like Hindu Swam Sevak Sangh in yeah, Texas, and then there were like 68 organizations, and then we are working. I'll show you a couple of things which we are doing in Texas. See this Texas Hindu site, yeah, campsite, yeah, just started. Okay, it's in yeah. Texas, and then we have Texas Gausala. Very Okay, nice. so yeah, so it's a big Gausala, Yeah, right? And then here in Austin, we also have Radha Madhav Dham. It's like big, 270 acres. good. Where yeah, so there's like a lot of initiatives are going on. Yeah, yeah, yeah. I think I know somebody from HSS who is in Texas, Dallas. You are in Dallas, right? No, Houston, Houston. Houston? Yeah. There is one Joshi ji who is also Mhm. involved. Uh, so I'll try to send you his number, because he Mhm. said that give me the connection who are the like-minded people. No, no, we are He is doing. also part of Yeah. Hindu Swing Sevak Sangh, and Mhm. he goes everywhere. He is kind of volunteering his time, just like we are volunteering here. Yeah, 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 HSS, he is pretty much going to all the North American countries, yeah, like Caribbean also. yeah. So what I think is that Mhm. one day camp, let's focus, try to develop a one day camp. How can we do one day camp? Because that will be easy for Yeah, everybody. One day yeah, people can spare, right? If you ask them three right. days, maybe difficult, but one day camp, and then maybe this should be SSS project. And Mhm. then in one day we can give a overview, and in such a way that we expose them, and then kids can gradually pick up what they want. I mean, I remember that in Phoenix, my son had a friends, few American friends. They were they were amazingly knowing about Hindu culture.
My son was not knowing much about Mhm. it, but this Mhm. American kid, he knew exactly all the Veda, Vedang, Puranas, and philosophies, Mhm. and this. I was amazed. So if you expose them, then they will pick up the interest whenever they're ready, right? Yeah. I don't know if you have heard about this YU, Vivekananda Yoga University. 3 weeks ago, that the founder of this university also joined us in Yeah, HSS program, and then they yeah, are doing a lot of like PhD in yoga, different Master of Science in yoga. So this will be our first like university. yeah. Good. I mean, we need things like that. I mean, this is Yes. good. Yeah, These yeah. are the good efforts because Mhm. now people are all over the world. There is a great interest in Sanatan Dharma, and we should stop calling Hindu Dharma. We should It's always Sanatan. focus Mhm. Sanatan Dharma. So, Yeah. Pankaj, never call yourself a Hindu. Call Sanatani. That Yes, is what we have. First thing we have to change. yes, sir. Uh, Yes. yeah, because Hindu Sabdi is very modern. It is coming from Farsi. It has no, and it means that all the people who are living in Indian subcontinent. So that is not the Sanatan means. Good. So yeah, I'll try Mhm. to write something for the small Yeah, article, not a big, but definitely. this something for on this topic. Thank you. Yeah. And then that same line, same thought we also have it in HSS. There Yeah, are 120 organizations, yeah, Sanatani organizations working in different really. ways, right? But we are Yeah, yeah. connecting on It's Sundays, very good. every Sunday. Yeah, And there is mhm, a temple over here, Bartal Dham. We'll yeah, meet on Sunday. Right? That's what we are planning. It's yeah, kind of RSS Sakha. yeah. So meet Actually, over there. talking about that, I was telling you what Joshi, the reason I came in touch with is that I'm trying to give a piece of land as a donation to RSS in my village, so Oh, that okay. in Madhubani, it's very close to Madhubani town, and so Joshi ji, who is in Dallas, I started with him, and then finally now I have got the name in India, the people in Patna and. Muzaffarpur who are kind of running the show of RSS. So hopefully, when I go in January, I'm planning to go. Well, I'll be able to give them the land, and maybe they can do whatever sakha they want to start there. So that's how I came in contact with them. Yeah. No. Yeah. No, actually, I studied in the RSS school. So I was like Oh, where did you study in RSS school? Bal Bharti Pragya Mandir in Munger. Oh, okay, all right. So maybe then I'll put you in that board which I'm trying to do Mhm. since you are already involved. So basically, if you know the RSS team, I mean, what should we do? Once I am going to donate 1 acre of land to begin with, and like I said, that there is no RSS branch in our area in Madhubani. I mean, Bihar has North Bihar still is open field for RSS. They Mhm. don't have they haven't started entering it, but not there. So maybe you can also kind of ask them whatever they want to do, like school. Mhm. Since you have been a student of a school, will be good. School or library or whatever they want to do, or Mhm. Mhm. Yeah. yeah, something like yeah, good, good to know. See, Mhm. when we talk, then we find out that we have some Yes. other common interest Yeah, also. yeah. Pankaj, The- how are things? Yes, it's very nice, sir. And I and want to this know, cultural flesh. Arjit, you are in class 7th, so you are learning Sanskrit language or not till now? Yes, Arjit? sir. Yes, sir. I learning Sanskrit language. Very Okay. good. So you heard that how important is the Sanskrit language. It's very important. We all should be. We imagine a day when whole India speaks Sanskrit. We all talk in Yes. Sanskrit only, Yes. and it's possible. It's not difficult. I think I'm taking a class, and hopefully you learn, and one day I'll be able to speak with you in Sanskrit. So you also try speaking Sanskrit. There are classes on speaking Sanskrit. I'm taking right Okay, now sir. online classes like that. I mean, Yes, it should be our cultural goal that all India should speak Sanskrit. yes, sir. And you guys, your generation can help. So, sir, according to you, so which language is important for us?
as a Sanatan Dharma, so which language is important for us? Um which is Sanskrit or English? So which one is No, no, no. great for us? Okay, all right, then. I got your question, and I have thought a lot on that one. Actually, in Indian perspective, basically, you have to speak four languages. So I tell you what, the mother tongue. Suppose if you are coming from Bihar, then Maithili, Bhojpuri, Yes, or Maghi, this is your family language, which you learn automatically. You don't have to put any effort for that, right? So that yes, sir. language, whatever is in your family language, whatever it is, Hindi or whatever it is. So that is the one language for your family and close relatives or your village or your neighbors. So that is what you need. One. Now, when you leave your home, your village, you go to town. This is a kind of melting place. Town is a melting place. So you have people from different villages, and they may be speaking this different family languages. So that's where Hindi comes into play. Or when you meet with students of other states in North India or wherever you go in India, other places. So for that reason, we also need Hindi. Okay. Number two, English is a commercial language of the world right now. So you have no choice but to learn English for the commercial language. And then fourth is the Sanskrit, which is our cultural language now. And our goal should be to make it our family language, language of communication, and ultimately language of business one day down the road, let's say 100 years from now, right? So uh, these are the four languages we need to speak and learn. And it can be done if you put a goal in front of you that, you know, for example, like all of us right now are exposed, we are here, we all pretty much know all these four languages. You already know local language, Hindi, English you are talking, and Sanskrit you are taking in the class. So all we need is little more effort. So that is how should be our language goal. We should not say that any of them is bad. No, I see some movement in India, like for example in Mithila region, they want to bring back Maithili, and they say that Maithili should be Hindi is harming Maithili, so Hindi should go out. No, why should Hindi go out? You learn all four languages. You can do it. God has given us enough capability that you can learn 10 languages if you want to. So why not? Why to settle only for one or two? Learn all four, and you can do it. Almost all of us are Okay, here familiar with all these four languages, and do more if one has time. okay, So sir. that is my thought on this language policy for us. Similarly, Muslim kids, they should learn Arabic instead of Sanskrit if they want, or maybe they should learn both Sanskrit and Arabic. They should learn five languages. Why not? They can do that. Yes, sir. Sir, I want to learn Sanskrit. Good. So, Sir, so sir, I love Sanskrit, sir. मतलब okay, I'll share with you a easy website where you can learn Sanskrit. So let oh, me just bring it up. I'll show you. okay. I'm watching that video from there. So give me a second. I have Sir, to which create a. website? I'll say, give me a second. Let me bring it first. Okay, sir. Okay. Okay. So let me now share with all of you. Okay. So I'm going to share with you like this one here. This is the online class, Sanskrit, and this is all the way from beginning to you can go all the way to like high school level or even there. So see this here. Here, how many I have reviewed this several classes and everything. If you can take online all these classes, look at it. How many lectures he has here? Uh, yeah, look at it.
There are so much. If you take his classes, and there will be a time when you can easily start speaking in Sanskrit in no time. So that serious. So there are so many courses. For example, I'll tell you another one. This is also I like. Give me a second here. Vyom Sanskrit learning. Here we go. So here. Okay, so this one is another one I'm going to show you here. Sorry, this one. Let me see why it is not sharing. So this is another. Is it coming? So this is Rashtriya Sanskrit Sansthan, and they have classes like speaking Sanskrit and then learning Sanskrit. So I mean, like that, there is a Biom. Biom has also another one. I was trying to find. Let me see if I can get it. YOM. I think it is BHYOM. Yeah. Sir, what its channel's name? Well, I am going to show you here. 1 second. Here. So this channel here, Learn Sanskrit Online. And the beauty of this one is that here, the classes are taught in Sanskrit itself. And once you take the few classes, you can easily understand the teacher's Sanskrit, because it is the same words. Like so few vocabulary you have to learn, and after listening to few of the lectures you will be able to do that one. So I gave you three different sources, which is which you can use, uh, and I can send an email to Pankaj also giving the link, but you can see this. So there is a biome parts, that is they do bunch of things. This is also another volunteer organization teaching Sanskrit, focusing on Sanskrit. Then there is Rashtriya Sanskrit Sansthan. They have a lot of classes in speaking Sanskrit also. They try to teach like in 10 days you should be able to speak Sanskrit. And then this is the third one I gave you, where you can also, he is a pretty good teacher. I have watched a lot of his videos, and so these are the resources online. And then if you want a teacher in India, I can give you even the name in India. I think one-to-one learning also you can do. He's from Bhagalpur. uh, he comes sometimes to this meeting also. Yes, sir. Pathak. Yeah. Perfectly. Yeah. So yes, so there are resources, but the thing is that people have to try, and once you have a desire, you will find it. जब प्यास लगती है ना तो आदमी पानी ढूंढ लेता है, कहावत है अपने यहाँ. So for example, I'm 70-year-old now, I'm learning Sanskrit. Can you imagine that in this age? So No, sir. uh, No, sir. yeah, I mean,
Uh, I'll show you. I'll show you my class. How are the people in my class? So let me bring that one too. 1 second here, so that you will be imagine they are all retirees here in America. Uh, Most of them are retirees. I would say that few are young professionals too, but mostly. So let me bring that one here. Your video, like video playlist. This is the one here, and let me see, where is my class? Oh, here. All right, so we got this. Yeah. So see here. So this is my class. She is the teacher. She is from Tamil Nadu. She is a scientist. She is a chemical engineer and professor in the professor of chemical engineering. And then for last 2 years, she's a volunteer. And she has been teaching arts. Both center is our mandir. He's more focused on the Advait philosophy. So there is a class on focus on learning, and so she's. So I have been. That is the temple I go to. So I have been taking this basic class of Sanskrit for the last 2 years, once a week. So I'm sure there are a lot of places in India also. You can you can do it. Like for example, I was telling you the first lecture. Let's see here. Alphabet, for example. Your sound is not coming, sir. Okay, that's fine. Okay, here I wanted to tell you guys that look, from this class, they start with from the alphabet, Sanskrit alphabet, and uh, and then you can see this here. They scientifically they tell you which word is pronounced from where, which part of your body, mouth or lips or your dental, and they explain how it is and all that. So they start from there, all the lectures, and then go from there. And Sandhi, how see here, so like that. And then so basically the point I'm trying to make is that yeah, it can be learned. It's not difficult. You have to spare some time, and and then there is a time when you have a desire, you can find time. um, and that's how we all do things in our life. Once we have an interest in something, then we find time to do it. For example, we all are here because we have interest in coming and meeting together. Right. Right, sir. We seen Dalpat ji also joined. Good evening, Dalpat ji. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग. बोलिए, कुछ बोलिए अपने बारे में. Yes, सर Dalpat आप कंटिन्यू करिए, बाद में बात कर लेंगे सर. ji. रिदम टूट जाएगा. ये हो गया. हम आप लोग संस्कृत के ऊपर में बात कर रहे थे, so that's हो गया. सर प्लीज वी कंटिन्यू. Yeah. Our ओके. topic is that we should make a goal that we all should speak Sanskrit. Should be the language of whole India, like right, family language, school language, work language, business language. Imagine a day when we all are doing everything in Sanskrit only. अभी जो है 400 की 300 भाषाएं इंडिया में चल रही हैं और उसके लिए फाइट होती रहती है. हाँ, कि सारे सारे स्टेट्स बनाओ, हर एक लैंग्विस्टिक स्टेट बनाओ, ये करो, वो करो. ये वाला साउथ वाला बोलता है कि भाई हिंदी नहीं चलाना है, हिंदी वाला बोलता है कि मैथिली नहीं चलाना है. दिस इज गोइंग ऑन. जबकि सारी लैंग्वेजेस सभी संस्कृत से निकली हुई हैं इंडिया की. So basically now, I don't know how many of you know that Sindhu Ghati script has been deciphered with help of American based Indian engineers using computer science simulation. So now it is done,
and all the controversies were over. Western वाले उसको मानते नहीं हैं अभी तक, but down the road they will accept. This is our ancient form of Sanatan Dharma was being practiced there. साइवाइट्स थे वो लोग वहां पर, और उसको सारा कुछ जितने भी उनके बहुत सारे जो उनके इंस्क्रिप्शन हैं वो डिसाइफर हो गए हैं अब. And the point I'm trying to make is that that is our original language. You can call it Sindhu Ghati language. From there came Brahmi, and from Brahmi came Sanskrit, Vedic Sanskrit, from Vedic Sanskrit to Laukic Sanskrit, and from Laukic Sanskrit to all the modern North Indian languages. तो ये तो है हिस्ट्री हमारे हमारे लैंग्वेज की. Sir, hello. या बोलो. Sir, okay. So sir, I think हमें एक दिन न कि वीक में हमें एक दिन तो संस्कृत के लिए निकालनी चाहिए स्पीकिंग के लिए स्पीकिंग क्लास. Good. तो थोड़ा सा पढ़ो, then maybe we will try. Even टूटी फूटी भाषा में भी बात कर सकते हैं. Maybe what we can start a club on that, and there are already club existing. We just have to find them. But this is how it begins. You know, we have to start. दो आदमी को मिल करके शुरू करना पड़ता है कोई भी चीज, right? So it can be Sir, done. yes sir. Sir, my छोटे जीजू, my छोटे जीजू is the teacher of Sanskrit, government Good. teacher of Sanskrit. Okay, so then you have one person in the family. Start talking to him in Sanskrit and tell him that there are other people interested also in Okay sir. talking to Sanskrit. Yeah, सर उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली है सर सीखने के yeah, लिए. yeah. I mean, you know, थोड़े से vocabulary बनाने की जरूरत है. Actually, some there उनको ही एक compile करें कि small vocabulary of the noun, pronoun, all these things, and how many, like for example, verbs क्या हम use करते हैं common day में, right? There are not that many. तो अगर ये बेसिक उसका जो है वो उसकी vocabulary हमारी तैयार हो जाए, उसको हम लोग सीख लें, तो then we can start talking. That's all it is. Yes sir. Yeah. Yep. I'm sending But couple of books, right? Like I just downloaded a couple of books. Okay. Right. शेयर कीजिए जरा, शेयर कीजिए. हाँ, मैंने शेयर किया है. इसमें देखो ना संस्कृत Yeah, it's coming. व्याकरण It's है. coming. आ रहा है, आ रहा है. Yeah. Good. So it's a PDF. It's a free. You can download Arijit if you want. I'm sending that link. I put that one link. This is the second one. So all resources are available, right? So it's Yeah. Very nice. But when I was in high school, I really liked one book, Sanskrit Sahachar. Yeah. It's a really good Vyakaran book. Yeah. You will be surprised that in the West and like America or Canada or Europe, if you go, if you ask them what is the Indian language they'll learn when they have interest, they all learn only Sanskrit. Mhm. Yeah. you know, they don't learn Hindi, Maithili, Bhojpuri, all these languages Yeah. which we keep fighting. No, they all focus on learning Sanskrit because Sanskrit is a big resources for many things. We don't know. Mathematics, all the work which he has done in mathematics in Sanskrit, that has inspired many Western mathematicians. तो इसीलिए उसी तरह से है मेडिकल साइंस में, फिलॉसफी में, every walk of life. व्याकरण, Panini is well respected all over the world as a top grammarian of the world. एक ग्रामर डे सेलिब्रेट होता है, उसमें पाणिनि का सबसे पिक्चर ऊपर में होता है, बिकॉज लैंग्वेज जो है पूरे दुनिया के पाणिनि को हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं कि he was the first one who thought that grammar should be properly organized, और उन्होंने किया. तो इस तरह से देखते हो, अगर आप देखेंगे तो हर एक फील्ड में जो है what was the first thing done, तो पता चलेगा ऑलमोस्ट पहली बार वो चीज इंडिया में हुई थी और वो भी संस्कृत में. many things.
तो इसीलिए संस्कृत इज नाउ कंसिडर्ड नॉट जस्ट द लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड अभी तो कंट्रोवर्सी चल रहा है कि इज संस्कृत द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ द यूरोप और नॉट. अभी वहाँ के लोग नहीं मानने के लिए तैयार हैं, बट बेसिकली कंट्रोवर्सी इज ऑलरेडी देयर कि भाई वो लोग प्रपोज कर रहे हैं कि लाइक स्टेपे व्हिच इज लाइक टर्की एंड ऑल दैट, वहां पर प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज वहां स्टार्ट हुआ एंड वहां से वेस्ट में गया यूरोप. That become the European language, first Latin and then the modern European languages. And in the southward journey from Proto-European, it went to Iran and Stan countries and then to India. And then it becomes like Persian and all our North Indian languages. तो ये थ्योरी है वेस्टर्न थ्योरी. बट अब मॉडर्न जो है इंडियन साइंटिस्ट जो लैंग्वेज के हैं फिलोलॉजी के फील्ड में, वो लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत है. एक्चुअली दिस माइग्रेशन इंडिया से हुआ है एंड इट मेक्स सेंस. अब जो है साइंटिस्ट लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो सिविलाइजेशन जो है वो खत्म हुई, वो इसीलिए खत्म हुई कि नदियां सूखने लग गई थी. देयर वाज बिग like 90 years of drought in that area. सिंधु घाटी सभ्यता जहां पर पूरा है लाइक हरियाणा से लेकर के पंजाब और सिंध, ये सारा इलाका जो है, इफ यू टेक लाइक वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. सो देन imagine a drought कोई एक साल नहीं हुआ, it was like 90 years period. So what happens when you have a drought in area? People start migrating to other places, right? And so it makes sense that इंडिया हैड ए पॉपुलेशन. ये सभी लोग जेनेटिकली बता रहे हैं कि अफ्रीका से अरब होते हुए ईरान होते हुए इंडिया में पहले 70,000 ईयर्स बैक पॉपुलेशन क्लस्टर शुरू हुआ. सो वी हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन और वहां पर एक 90 इयर्स का ड्रॉट हुआ, तो इट मेक्स सेंस दैट पीपल माइग्रेटेड some places. So they could have migrated where? चारों तरफ जाएंगे ना, जहां भी मौका मिलेगा जाने के लिए. सिर्फ इंडिया में ही तो नहीं रहेंगे. There was no boundary like nation state in those days. So they it makes sense. And that इंडिया से माइग्रेट होके लोगों ने पॉपुलेट किया यूरोप को और दूसरे जगह. तो अभी इस पर चल रही है बहस कि क्या है. तो आउट ऑफ इंडिया थ्योरी एक तरफ है, दूसरी तरफ जो है प्रोटो इंडियन थ्योरी. तो ये है दोनों थ्योरी भी कि रूट कहाँ से है, कहाँ से हम सारे लोगों का यूरोप से लेकर के इंडिया तक के लोगों का रूट है. सो होपफुली इन योर जनरेशन सम पीपल विल फाइंड सम कन्विंसिंग इंफॉर्मेशन इन फ्यूचर रिसर्च और तो होगा. तो ये है. ऑलराइट, तो पंकज आई थिंक इट्स टाइम नाउ, राइट? चलिए दलपत जी कुछ पूछिए, आपको कुछ बताइए या कुछ शेयर कीजिए. अब आए हैं तो कुछ तो करना पड़ेगा. ये तो रूल है यहाँ पर. ऐसे तो हम लोग जाने नहीं देंगे, कुछ तो सुनाइए. And now Vibhuti is also joined, sir. He just received one job after joined this season. Yes. वेरी नाइस विभूति, कंग्रेचुलेशंस. Thank you so much. Thank you so much, Amarnath sir. And hello, Rajiv sir, Amarnath sir, Pankaj sir. Hello, hey Vibhuti, Happy to see you congratulations. all. Right now, I'm in village. In my village for Chhat Puja and Diwali. Okay, good. So which Yes, company sir. you are joining? I will join Blinkit in January. And what they do? Blinkit. What kind of The work job they profile is for semi-management type of. Yes, so job profile is related to semi-management type of work. Like I have to manage workers there, and all the equipment which are used in warehouse. I have to uh, provide proper maintenance and documentation about the equipment.
with the original manufacturer. Okay, good. And your background is what Yes, sir. engineering? What engineering is your background? Civil engineering. Oh, okay. Civil engineering, sir. Yeah. Okay. Very good. Thank you so much, sir. Yeah. So you have to learn SAP from Rajeevjee. You need to use that for tracking uh, everything. Yes, I think Vibhuti needs to continue join this session for take Yeah. advantage. Yeah. Yeah. Because everything is now database, right? So you have to learn at least one system. And once you learn one system, the same thing is in other system. Om Prakash ji is also here now. Yes. Sir, good evening, sir. Sir, I'm right now in the Mithila Bhoj, so in Pune. Right. So Pan, Yeah. yeah, that's why you are joining for Pan Supari, right? Yes, At sir. the Yes, end. sir. So, so there is a pan supari vyavastha in the Yes, bottom sir. floor. Yeah, Bottom. Uh, uh, so we are taking the Mithila Bhoj yeah. plus the curd and sugars and So yes, sir. So was it people are chura dahi? yes, चूड़ा दही नहीं दाल भात और अदौरी की सब्जी अदौरी बैगन की सब्जी और Okay, दही दही और ये सब और रसगुल्ला very रस, nice. रसगुल्ला बिल्कुल फोर्सफुली दे हैव गिवन द फोर्सफुली सो Rasgulla, huh? Yeah, रसगुल्ला हाँ छेना वाला yeah. uh, uh, so so in there so Pankaj is pinging me so I right now so sometime free so there many Mithil persons are gathered here so we are discussing on the any topics upcoming event in held in Pune city. That's why we are. Sir, congratulations, sir. Sir, Trump is coming. Yes. Hello. Sir, Trump is What is it? coming. What is your reaction? What is the reaction? You guys. Reaction is a good. Trump is our brother. So everyone Indian telling that Trump is our brother. Oh, Yes, sir. But he announced that some non-working person also जो बाहर वालों के लिए जो वर्क परमिट पे है उनको बाहर भेजने के लिए कुछ तो अनाउंसमेंट था उसके अंदर न्यूज के अंदर ऐसा मैंने पढ़ा था. no, 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 not that. You guys have misunderstood here. Okay, Okay. this is a So humor. This is a humor. yeah, no. So Usual I'll public. explain. I'll explain to you. So, Uh, you know, in America, unemployment is level is only about 3 to 4%. Okay, so normally that is what is kind of baseline unemployment. 100 में 3-4 लोग ही बेकार होते हैं यहाँ पर, नहीं तो बाकी सारे लोग काम करते हैं जो काम करने वाले एज में होते हैं. एंड इट समटाइम्स इट गोज अप. अगर 5% चला गया देन यहाँ पर पैनिक हो जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रहा है सोसाइटी में, इकोनॉमी में, समथिंग हैज टू बी डन. तो और अगर मान लीजिए उसी तरह जो है 3% के बदले में वो 2.5% हो गया या 2% हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, तो होता है कि भाई इतनी शॉर्टेज हो गई है, क्या चक्कर है. सो व्हाट हैपेंड इन लास्ट 5 years और 5-7 सालों में कि नाउ अमेरिका इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ लेबर क्लास. पढ़े लिखे लेबर क्लास नहीं, हमारे जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, अकाउंटेंट नहीं, जो खेतों में काम करने वाले, जो बिल्कुल जो जिसको गांव का मजदूर बोलते हैं, यू नो दोज हु वर्क रियली विथ हैंड्स. सो ऐसे लोगों की शॉर्टेज हो गई इस कंट्री के इकोनॉमी में. ओके, अब ये हो गया कि भाई आदमी कहाँ से लाए. तो बाइडेन साहब ने, जो हमारे जो भी प्रेसिडेंट हैं बाइडेन साहब, उन्होंने कहा बॉर्डर खोल दो और जिसको आना है आने दो. ओके, और उसको इमिग्रेशन जो है वो पहले पुलिस जो टाइट करके रखती थी पूरा बॉर्डर को, उसको थोड़ा ढीला कर दो ताकि जो आना है. तो क्या हुआ कि सारे साउथ अमेरिका से लोग जो है
आने शुरू हो गए, और उसके बाद बाहर से भी इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बाकी जो है जहाँ पर भी डेवलपिंग कंट्रीज में लोग हैं, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। तो उससे क्या हुआ कि पिछले 4-5 सालों में ऑलमोस्ट 20-30 मिलियंस, मतलब 2-3 करोड़ लोग जो है घुस गए अमेरिका। ओके? तो अच्छा, तो इकोनॉमी में तो वो एब्ज़ॉर्ब हो गए हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि उसकी ज़रूरत थी उस तरह के लोगों को, अमेरिकन इकोनॉमी को, काम करने वाले लोगों को। तो वो लोग चले गए वहाँ पर। अ, तो लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो यहाँ के जो लेबर क्लास के लोग ऑलरेडी थे, उनकी इनकम पर उस पर चैलेंज हो गया, क्योंकि आप जैसे सुनते हैं ना कि वहाँ पर मद्रास में, चेन्नई में बिहारी मजदूरों को पिटाई कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पर जाकर के रेट, वहाँ का जो लेबर का रेट था उसको सस्ता कर दिया, क्योंकि वो अगर मार्केट रेट था कि हम 1000 रुपया डेली लेते हैं, बिहारी मजदूरों ने कहना शुरू किया कि 400 में भी चलेगा। तो तब तमिलनाडु के मज़दूरों ने कहा कि नो, 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 इसको मार के भगाओ, क्योंकि ये लोग तो हमारी जॉब जो है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, स्टैंडर्ड है, उसको नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं ये एक्स्ट्रा मज़दूर आ जाने से, बिहार से। एग्ज़ैक्टली सेम थिंग हैपेंड हियर। तो यहाँ के जो मज़दूर क्लास के लोग थे, जिनकी लाइफ स्टैंडर्ड ठीक-ठाक चल रही थी, उसको चैलेंज हो गया, क्योंकि ये बाहर वाले मज़दूर उनके जॉब लेने लग गए। वो लोग माँगते थे $20, $25 एन आवर, और ये जो बाहर के भी मज़दूर आ गए, वो लोग $10 में भी काम करने के लिए तैयार हैं। तो बिज़नेसमैन तो बिज़नेसमैन होता है, वो $10 वाला को रखेगा, $20 वाला को भगा देगा। So लॉट ऑफ अमेरिकन वर्कर्स, नीचे वाले जो थे, उनकी ले ऑफ हो गई, उनकी जॉब चली गई, या उनको नौकरी नहीं मिल रही है, उनको काम नहीं मिल रहा। उनका काम ये बाहर से जो आ गए अभी 4-5 करोड़ लोग, 2-4 करोड़ के वाले, वो लोगों ने ले लिया। तो ये चक्कर हो गया। तो इसीलिए जब ये हो गया, तो इस पर डेमोक्रेटिक पार्टी का तो है कि आने दो, और रिपब्लिकन कहा कि नहीं, हम इसको नहीं आने देंगे। तो इनको भगाए यहाँ से। तो ये मेन जो है इलेक्शन का अभी मुद्दा था। एक वन ऑफ द मुद्दा जो इलेक्शन का, कई मुद्दों में से एक मुद्दा ये था। तो ये हुआ। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं, जो प्रोफेशनल क्लास के लोग जो होते हैं, पहली बात तो ये है कि लाइक इंडियंस और चाइनीज़, हम लोग जब आते हैं यहाँ पर, तो वी कम ऑन प्रॉपर वीज़ा के साथ आते हैं। उसके लिए कोई क्योंकि हम लोग इल्लीगल नहीं हैं। कोई भी बाहर की कंट्री से जो पढ़े-लिखे लोग आ रहे हैं, दे कम ऑन स्टूडेंट वीज़ा और H1 वीज़ा और ये वीज़ा, वो वीज़ा, यू कम ऑन वीज़ा, एंड ग्रेजुअली यू, यहाँ का प्रोसेस जो है इन लोगों का इंटीग्रेट करने का, जो इमिग्रेशन प्रोसेस है, उसमें हम लोग चलते हैं। 15-20 साल लग जाता है, बट तो लेकिन अपना आप काम करते रहिए, वो अपना 15-20 साल में प्रोसेस होता रहेगा। तो उस कैटेगरी के लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके? उनके ऊपर कोई नहीं है, बल्कि उसके मामले में तो ट्रम्प का कहना है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अभी आजकल क्या है कि जैसे इंडिया से इंजीनियर्स आते हैं, या यहाँ जो पढ़ करके फिर एब्जॉर्ब होते हैं, उनको 15 साल लग जा रहा है ग्रीन कार्ड वगैरह पेपर तैयार होने में। तो उसका कहना है कि इसको खत्म हम करेंगे। वो कहता है कि जो जो जिन्होंने इस अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में आके मास्टर्स कर लिया है इंडिया से आकर के, उनको हम वापस नहीं जाने देंगे, बिकॉज दे आर ग्रेट एसेट टू अमेरिका। वो जो टेक्निकल करके यहाँ पर आ गए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको we will make things simpler for them, so that they have a choice here to stay if they want to stay in this country. तो तो ये प्रॉब्लम है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आगे Yes, sir. बात Yes, समझ sir. में? It या is clear, sir. My cousin brother is also there, so they have doing the research work in America. So या तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट okay. इज ए प्रॉब्लम ऑफ द जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो घुस गए हैं बॉर्डर के थ्रू लास्ट 5 इयर्स में। ओपन बॉर्डर बाइडेन ने खोल दिया था, उसके चलते। Yes, sir. एंड Yes, sir. एंड और बेसिकली इस बार जो हारे हैं, या सो दिस वाज द मेन मुद्दा। यही मुद्दा ने हरा दिया है इसको, डेमोक्रेटिक पार्टी को। ये जो है मेन मुद्दा था, क्योंकि लेबर क्लास के लोगों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होती है, राइट? और लेबर क्लास के लोगों ने जो है, वो हर एक कम्युनिटी से जो है, उन्होंने आंख मूंद करके इस बार ट्रंप को वोट दिया, क्योंकि वो लोग नाराज थे डेमोक्रेटिक पार्टी में। पहले वो सब के सब वोट करते थे लेबर क्लास के लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल दी। उन्होंने कहा कि नहीं,
डेमोक्रेटिक पार्टी तो क्या-क्या चीज़ कर रहा है भाई, हमारे पेट पे लात मार रहा है। सो बाहर से मज़दूर ला करके। तो ये हुआ है यहाँ पर। अ, और दूसरी लड़ाई ये भी थी कि जैसे अमेरिका ठीक है एडवांस हो गया, लेकिन आप तो जानते ही हैं, औरत को टॉप पोजीशन देने के लिए भी अमेरिका तैयार नहीं है। खास करके गोरे लोग उसमें ये जो है एक ये इसको इन लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को बना दिया था। उसमें से एक औरत जो कि अ अ, क्वार्टर इंडियन, हाफ इंडियन जो भी बोल लीजिए है, और अपने आप को ब्लैक कहती है लेकिन ब्लैक है नहीं। तो क्या हुआ कि ब्लैक कम्युनिटी का भी कहना था अमेरिका में कि ये तो ब्लैक है नहीं। उन लोगों का कहना है कि ओबामा भी ब्लैक नहीं था। हाँ, ये लोग अब हमारे जो अपने ब्लैक हैं, उनको हमको आगे बढ़ाना है कि बाहर से आकर के जो अपने आप को ब्लैक का लेबल बना देते हैं, नकली ब्लैक बन करके जो है हमारा पोज़ीशन देने की कोशिश करते हैं। तो वो उनको हमें रोकना है। तो ब्लैक कम्युनिटी में भी दो फाड़ हो गया था, एंड मेनी मेनी ब्लैक्स जो थे वो कहते थे कि नो, वी वांट रियल अफ्रो अमेरिकन जिनके बच्चे बड़े हैं, बड़े हुए हैं, जिन्होंने स्ट्रगल किया है इस कंट्री में। वी वांट ओनली देम एज ए पॉलिटिकल लीडर्स। तो क्या हुआ कि अभी इनको कमला हैरिस को जो है ब्लैक लोगों ने भी वोट ठीक से नहीं दिया। गोरे लोग तो वो बोल ही रहे थे कि भाई कुछ भी है, थोड़ा बहुत तो डिस्क्रिमिनेशन है ही ना। गोरे लोगों ने भी कहा कि नहीं, हम अभी तैयार नहीं है कि एक औरत डोमिनेट करे पॉलिटिक्स में, वो भी एक अफ्रो अमेरिकन या इंडियन अमेरिकन औरत। हुँ। तो एक ये मुद्दा भी हो गया था। सो देयर वर मेनी मेनी, इकोनॉमी का मुद्दा था इन जनरल। काफ़ी कुछ महँगाई बढ़ गई थी। सो दीज़ आर द 3-4 बड़े मुद्दे थे जिसके चलते जो है डेमोक्रेटिक पार्टी की हार हुई। Okay, sir. Sir, this is the election. In the any Indian person have the won this key elections? Oh yeah, there are 5-6 Indians who are MP, member of parliament यहाँ पर। Look like the senator. They have the नो, telling नो, about. सीनेटर सीनेटर नहीं है, सीनेटर बनना मुश्किल है। अभी सीनेटर तो खाली वही जो है, आप कह सकते हैं कि कमला हैरिस हैज़ बिकम सीनेटर फ्रॉम कैलिफोर्निया, हाफ इंडियन जो भी कह लीजिए, बट वो वहाँ तक। लेकिन हाउस जो है, जिसको लोकसभा यहाँ बोलते हैं, वहाँ पर 5-6 लोग हैं। They सो कि देयर इज़ they have won या फिर कि they have the nominated. नो, देयर इज़ नो नॉमिनेशन। वो सब यहाँ पर नॉमिनेशन जो है वो नहीं चलता है। यहाँ पर सब कुछ डायरेक्ट इलेक्शन होता है। प्रेसिडेंट का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और हाउस का भी, मतलब लोकसभा का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और सीनेट का भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो जो अपने यहाँ का जैसे राज्यसभा हुआ। सो द Okay. डिफरेंस इज़ बिटवीन इंडिया का राज्यसभा में और यहाँ का सीनेट में जो डिफरेंस है वो भी समझ लीजिए। इंडिया का जो राज्यसभा है, वो पता नहीं क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है कुछ मालूम नहीं, राइट? Sir, वहाँ पर तुम many देखते हैं कि sir, यू नो सेम sir, पीपल हू आर लूजिंग इलेक्शन इन लोकसभा दे बिकम द राज्यसभा, और जिसको टिकट इधर से नहीं, दैट इज सो वेरी बेसिकली दैट इज हाउ आई सी इट। देयर इज, बट यहाँ पर क्या है, द सीनेट जो है, यहाँ पर 50 स्टेट्स है। हर एक स्टेट से 2 सीनेटर होते हैं। तो उसकी इलेक्शन पूरे स्टेट में होती है। तो सीनेट इज़ स्टेट पावर, ठीक है? उस एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से दैट महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र में आपके महाराष्ट्र है चाहे गोवा है, एक इतना बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, और यूपी है, और गोवा हुआ और हिमाचल हुआ। तो हर एक स्टेट से सिर्फ 2-2 सीनेटर होंगे, छोटा हो या बड़ा। तो यहाँ 50 स्टेट है, इसलिए 50 दूना 100, 100 सीनेटर्स हैं। सो दैट इज़, ये है उसकी चुनाव पूरे स्टेट से होती है, और वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसी जैसे पूना या मुजफ्फरपुर या दरभंगा या दिल्ली साउथ को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। पूरे, मान लीजिए कि पूरे स्टेट हरियाणा को रिप्रेजेंट करेंगे। सो सो दैट इज़ व्हाई कॉल्ड सीनेट, यहाँ का पावर। और तो इट इज़ डिफरेंट देन इंडिया का राज्यसभा से।
पूरी स्टेट को। सो यहाँ पर पावर के सोर्स हो गए 3। एक तो हो गया स्टेट का पावर, जो कि ये सीनेट करते हैं, और दूसरा होगा ये आपको लेजिस्लेटिव, जो जो अपने यहाँ का लोकसभा जैसे हुआ, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर कितने हैं? आई थिंक इट्स 534 है यहाँ पर टोटल सीट्स पूरे कंट्री को, पॉपुलेशन। तो छोटे-छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसे अपने यहाँ है दरभंगा, मुज़फ्फरपुर, दिल्ली, हरियाणा और ये वो, मतलब हरियाणा नहीं, जो भी बोलते हैं गुड़गाँव, तो ऐसे करके है। और तीसरा हो गया प्रेसिडेंट। यहाँ पर कानून बनाने का अधिकार प्रेसिडेंट को नहीं है। कानून बनाने का अधिकार जो है वो अ, हाउस और सीनेट के लोगों को है, उनको पावर है। वो लोग कोई भी नया बिल शुरू कर सकते हैं। प्रेसिडेंट कैन नॉट। प्रेसिडेंट को अगर कुछ करना है तो वो अपने पार्टी के लोगों को बोलेगा कि भाई आप लोग ये बिल लाइए, ना बनाइए वहाँ पर। दूसरा यहाँ पर पावर का सेपरेशन भी है कि अगर आप एग्जीक्यूटिव में आना चाहते हैं, यहाँ पर जो यहाँ के जो एमपी हैं वो मिनिस्टर नहीं बनते हैं। अगर वो मिनिस्टर बनेंगे तो उनको रिजाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए कोई सीनेटर जो है अगर वो एग्जीक्यूटिव पावर में जाएगा, प्रेसिडेंट में या उनके कैबिनेट में, तो उनको रिजाइन करना पड़ता है। दे कैन नॉट बिकम। तो और सो इतने ये सीनेटर्स जो हैं वो मंत्री नहीं बन सकते हैं, 2-2 चीज़ नहीं रख सकते हैं। अगर आपको मंत्री बनना है तो सीनेटर का जगह खाली करना पड़ेगा। अगर आप हाउस में हैं, एमपी हैं, आपका काम है कानून बनाना और उसको कानून बनाना, और प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच का काम है कि उसको एडमिनिस्टर करना। तो ये है, दोनों का ये ओवरलैप नहीं होता है। ना तो प्रेसिडेंट कानून बना सकता है और ना लेजिस्लेचर्स जो हैं वो जाकर के एग्जीक्यूशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एकदम सेपरेशन है अलग, एंड ऑफ कोर्स कोर्ट अलग है। कोर्ट भी इंडिपेंडेंट है यहाँ पर। तो 4 ब्रांचेस हैं यहाँ के गवर्नमेंट के। प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव ब्रांच में दोनों आ जाते हैं, सीनेट एंड हाउस। उसको हम लोग यहाँ पर हाउस बोलते हैं। आप लोग जैसे पार्लियामेंट बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर हाउस बोलते हैं। और दूसरे नाम उसको हम लोग कांग्रेस भी बोलते हैं। कांग्रेस जब बोलते हैं तो उसका मतलब हो गया राज्यसभा और लोकसभा दोनों, सीनेट एंड हाउस दोनों का मिला करके कांग्रेस बोलते हैं। और तीसरा हो गया कोर्ट। तो सभी इंडिपेंडेंट है। ये तीनों ब्रांच जो हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, they are all independently functioning. Sir, what is the qualification for the minister? Is there? तो रिटेन क्वालिफिकेशन तो कुछ भी नहीं है No, ऐसे यहाँ। I mean MP are won the MP election. They have got to Sansad and they have making the bill. So they have the cabinet mantri. So they have the also parallel to the Sansad. So that's what that we have. There American is the what is the qualifications? Who Well, will make the minister? सो ओके। तो पहले समझिए कि बेसिकली दिस कंट्री में जो है पॉलिटिक्स में ज्यादातर लोग जो हैं वो लॉयर्स हैं यहाँ पर। ओके, पहली बात तो ये समझिए इन जनरल। लेकिन एजुकेशन में जैसे अपने यहाँ इंडिया में पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए कोई कॉलेज डिग्री या किसी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसा ही यहाँ भी है। देयर इज नो ऑफिशियल रिक्वायरमेंट कि व्हाट शुड बी योर एजुकेशनल बैकग्राउंड। लेकिन होता क्या है, सो बेसिकली हु आर देयर, अपर मिडिल क्लास के जो लोग हैं या रिच क्लास के लोग जो हैं, बेसिकली यहाँ भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के लोग पॉलिटिक्स में हैं। तो वो क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, पहली बात तो ये हो गई। और उसमें मोस्टली लॉयर्स हैं, ये इन जनरल ये हो गई। अच्छा, अब ये है कि पॉलिटिक्स में कौन लोग घुसते हैं यहाँ पर। हाँ, अब इंडिया में क्या है और यहाँ पर क्या है, दोनों में अंतर देख लीजिए। अब इंडिया में क्या है आपको, जैसे कि ये राहुल गांधी हुए, प्रियंका गांधी हुई, या अखिलेश यादव हुए, या उसका लालू का बेटा है। बेसिकली इन लोगों के पास दे दे जस्ट उनका क्वालिफिकेशन ये था कि बड़े बाप के बेटे थे, बड़े पॉलिटिशियन के बेटे थे। वो यहाँ नहीं चलता है। एवरीबॉडी हैज टू प्रूव फर्स्ट कि यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आपने प्राइवेट कंपनी को रन किया है या वहां पे कुछ किया है काम, और
या तो आप मान लीजिए कि प्रोफेशनल हैं, तो जैसे कमला हैरिस जो है वो सीनेटर बनने से पहले वो जो है शी वाज द टॉप लॉयर ऑफ द कैलिफोर्निया स्टेट, जो पूरा तो ऐसे करके जो है कुछ ना कुछ आपको जब आप खड़े होते हैं तो इलेक्शन के लिए तो उससे पहले आपको दिखाना पड़ता है कि बेसिकली आपने क्या प्रूव किया, कुछ क्या किया है। तो इसलिए नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पर कोई बाप का बेटा और बेटी है इसीलिए नहीं कोई क्वालिफाई करता है पॉलिटिक्स में जाने के लिए। पीपल वा आस्क कि अपने क्रेडेंशियल में देखता है लोग कि भाई क्या किया है इसने। हाँ, तो नॉर्मली पीपल इंटर पॉलिटिक्स हियर 30 के बाद ही पॉलिटिक्स में करते हैं कि आपको कुछ पहले दिखाना पड़ता है। इवन फॉर एग्जांपल जैसे बड़े बाप के बेटे जैसे सीनियर बुश के बेटे जूनियर बुश थे, सो ही हैज टू शो कि उन्होंने एक कंपनी किया था ऑयल का, वो ऑयल के कंपनी में उन्होंने उसको किया था जो भी किया था। तो बेसिकली सबसे जैसे यहाँ पर पप्पू गांधी को इंडिया में रिस्पेक्ट है उतना ही रिस्पेक्ट जूनियर बुश को था, बट स्टिल उसको भी पुश करने के लिए पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं हुआ कि बस बाप का बेटा है तो सीधे खड़ा हो जाएगा। ही ही वर्क फॉर प्राइवेट इन द प्राइवेट इंडस्ट्री, उनकी अपनी कंपनी थी ऑयल एंड रिफाइनरी में वो काम करते थे उस ऑयल इंडस्ट्री में टेक्सास में। He proved it first year, then he became the chief minister of the Texas state, and then when time came, he became the president of the country. तो ऐसा ही होता है यहाँ पर। ये नहीं कि कोई बाप का बेटा है तो सीधे ऐसे ही हो जाएगा। यू हैव टू प्रूव कि आपने कुछ किया है एंड देन यू इंटर पॉलिटिक्स, तब आपको लोग ये करते हैं। ये है। Yes. Okay. Okay. Okay, sir. It's clear now. Right today in group Dalpat, my friend is there. So I text him message, please come in our group. Very So good, right very now, good. yeah. So if Dalpat has any question, Dalpat ji, you can ask any question or anything before we close. नो Only सर, थैंक यू general वेरी talk. मच सर, बहुत अच्छा सेशन था सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you very much also for joining us. वेलकम सर। So then I think if no question, then I guess time to close the meeting. Pankaj? Yes, sir. Sir, थैंक यू सर। sir, Pankaj ji, right now, my friend going to normal job to business sector. So he established his personal business. So right now he is planning mood. So that's why he is the newly guy in the group. So he have no question, but he have a lot of questions. So he had drive the own business. So that's why he had searching some things. It is better choice or it is risk for us. What kind of business he's trying to get in? Dalpat, please. सर अभी करंटली तो अभी मैं सिर्फ सर्विस सेंटर से ही स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा अभी फाइनेंशियल उतना अभी नहीं है बजट। तो अभी कुछ कंपनीज के जो ब्रांड हैं ऑलरेडी चल रहे हैं, रनिंग में हैं, उनका ही कुछ सर्विस सेंटर्स लेके उससे ही स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में फिर देखता हूँ क्या करना है। और बाकी थोड़ा कोचिंग वगैरह का भी मैंने एक फ्री कोचिंग का, मतलब वो तो सीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सोच रहा था कि कुछ जैसे कि जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए, या कोई फाइनेंशियली वीक स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग मैथ्स से रिलेटेड या जो मैं हेल्प कर सकता हूँ थोड़ा सा कुछ इस तरह से स्टार्ट करूँ। Very good. हाँ, सही होता है। I mean this is how happened. You know, यहाँ पर भी ऐसे होता है। Basically small business is the key. किसी भी सोसाइटी के लिए बड़े बिजनेस जो होते हैं, इन अमेरिका आल्सो 40% ऑफ द इकोनॉमी इज अ स्मॉल बिजनेस। पीपल लाइक यू नो हु शुरू में थोड़ा काम किया, कुछ किया, उसके बाद जा करके जो है इन द मिडिल एज दे स्टार्ट बिजनेस। यहाँ भी ऐसे ही होता है कि भाई ठीक है, वाइफ हस्बैंड है, कपुल हैं, हो गए 40-45 में जब आ गए तो चलो एक आदमी बोलता है कि भाई एक आदमी काम छोड़ो और कुछ बिजनेस स्टार्ट करो, कुछ करो, ताकि अपना कुछ हो जाए, राइट? ताकि बुढ़ापा तक चले, क्योंकि नौकरी तो एक दिन खत्म हो जाती है। तो
that is how the business grows. Everywhere is the same. And और हम लोगों का क्या है कि इंडियन लोगों के एडवांटेज ये है कि वी आवर ब्रेन वर्क्स लाइक ए बिजनेस क्लास पीपल. वी आर वेरी फ्री थिंकर लाइक अमेरिकन, कि हम जो है वो मल्टीप्लाई करना पसंद करते हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोग फ्री खाली खाने वाले लोग हैं. दैट्स व्हाई वी आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड. कि भाई ये लोग जो हैं वो दूध में चीनी की तरह हैं. जब आएंगे तो दूध को मीठा कर देंगे. So that is the Right, sir. difference. So that's very good. और आइए कुछ सवाल पूछना हो तो, अगर कुछ अमेरिका में करने का है तो जैसे यहाँ पर भी आप कर सकते हैं. जैसे यहाँ का कोई फ्रेंचाइज ले सकते हैं किसी कंपनी का, इंडिया में कुछ खोलना हो तो यू कैन Sure, डू sir, दैट. sure. यू कैन डू. मेरी सिस्टर इन लॉ है सर, वो एक्चुअली पहले दे वर स्टेइंग इन यूएस, बट currently they shifted into Canada because she is working in TCS and her husband is working in Tech Mahindra, Indian companies, but they are currently they are staying in Canada. Oh, okay. Yeah, sure. तो चलिए फिर पंकज Okay, जी. sir. Thank you very much, sir. Okay. Okay, Yeah. sir. Okay. Okay, sir. Very nice meeting, sir. Good night. So, Pankaj ji, good night. Good night. So Dalpat ji, please try to join Saturday session also. Sure, sir. Sure. Definitely, sir. Okay, okay. Okay, Pankaj ji. Bye.